फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and what a game between India and Afghanistan. The third T20 आए, पहले इंडिया ने पोस्ट करे 212 रन courtesy a fine 100 from the captain रोहित शर्मा and a brilliant knock from रिंकू सिंह. उसके रिप्लाई में अफगानिस्तान ने भी 212 रन लगा दिए बोर्ड पे. मैच हुआ टाई. उसके बाद पहले सुपर ओवर में गया. पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने बैटिंग करी और 16 रन लगाए और इंडिया ने रिप्लाई में भी 16 रन किसी तरीके से लगा दिए. उसके बाद द गेम वेंट इनटू द सेकंड सुपर ओवर जिसमें इंडिया कुड मैनेज टू पुट अप जस्ट 11 रन, लेकिन रवि बिश्नोई ने बॉलिंग करी और दोनों विकेट चटकाई जस्ट फॉर 1 रन एंड इंडिया ने फाइनली इवेंचुअली ये मैच अपने नाम कर लिया और सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया. वेल, अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस, अ लॉट टू टॉक अबाउट द कैप्टेंसी, अ लॉट टू टॉक अबाउट द इंडियन बैटिंग, बॉलिंग एंड एवरीथिंग. वेल, टू टॉक अबाउट ऑल दिस आई हैव विद मी ताओस रिजवी एंड जेमी ऑल्टर. Welcome to Cricket Next. Welcome back to Cricket Next, guys. Jamie, what a mad game. I will come to the scrutiny part, but what a mad game! What a experience for the spectators. बिल्कुल, स्पेक्टेटर्स ने एक मैच क्रिकेट में 3 मैच देख लिए आज तो. दिस वाज जस्ट जस्ट सुपर ओवर पे सुपर ओवर बहुत बहुत रेयर होता है. पूरा 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 पैसा वसूल मैच. Who'd have thought कि यार विराट कोहली और सैमसन के घटिया शॉट्स के बाद 22-4 से 212 ऊपर से स्पिरिट गुरबदरी नाइब, क्या बंदा, उसके डोले. यार हमारे पास ऐसे 2-3 बंदे होते थे शायद हमें कोई ट्रॉफी जीतते. दिस इज लाइक जिगरा, चलो ठीक है, चिन्ना सामने है, पाटा विकेट है, बट टू ऑलमोस्ट चेस इट डाउन व्हेन द चिप्स आर आल्सो डाउन. इनिंग्स और फिर रोहित की बैटिंग, रोहित के नखरे, विराट की फील्डिंग, सैमसन का स्टफिंग, everything was there. और सबसे बड़ी बात है कि टीम जीत गई तो फैंस ultimately despite probably some heartache got what they wanted. So good fun. यही तो है T20 यार. Enjoy. Don't take it too seriously. Yeah. Taos bhai, what are your thoughts? What a game. What a fine experience for the spectators. थोड़ी बहुत एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन मजा आ गया ऐसा गेम देख के यार. और I'm very very happy for the Afghanistan side, the way they have been improving every now and then. Absolutely. अफगानिस्तान अच्छी टीम है ही obviously, but then यहाँ पर मैच भी अच्छा हो गया. Apart from that, if you look at this T20 cricket, I believe that it's no one's game यार. T20 में कोई फेवरेट नहीं होता क्योंकि कोई भी टीम कहीं से भी आके जीत सकती है. और हम देखे हैं ओवर द टाइम, लाइक इन द पास्ट, कि बहुत ज्यादा अपसेट्स होते T20 क्रिकेट में. और आज इंटरेस्टिंग मैच ऑब्वियसली देखने को मिला एंड अच्छी फाइट पुट अप किया अफगानिस्तान में, वेरी वेरी क्लोज. एंड यार एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस काउंट्स, और वो इंडिया का एक्सपीरियंस फाइनली आया, जो काउंट हुआ, जिसकी वजह से आज इंडिया मैच जीती. नहीं तो अगर सुपर ओवर के हिसाब से जाते अपना पहला रिकॉर्ड्स के तो शायद अफगानिस्तान के फेवर में था, क्योंकि 7 विकेट्स भी थी शायद, या इक्वल होता. बट देन ओवरऑल व्हाट एन फन गेम. बट रात के 12 बज रहे हैं तो लेट सोएंगे हम आज, देर से उठेंगे सुबह. Yeah. And on इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा है. Until you are the show goes on. Yeah. And on that note, Very bad captaincy. I'll also join Vineet Ramakrishnan in this live session. Vineet, what a game! What a fine game, yeah. Ridiculous, man. Chutzpah Chinnaswamy is what I would call it. But पूरा पैसा वसूल हो गया क्रिकेटर से. उनका Well, definitely you needed a game like this, right? After the 2 drab matches that you saw India dominate, good to see Afghanistan fight back. But then again, yeah, to Jamie's point, this game could have been closed out much earlier as well. But he can drama that comes in lead, that's good enough. 2 super overs. I think that's the first time in a T20 game. We've seen that in IPL, but 2 super overs. And the manner in which it went to the super over, that 3 deflected byes of Nabi, Rohit Sharma, really going organs blazing after that. And then, script well written, so to speak. Yeah. But Jamie, मैच तो बहुत पहले एंड हो सकता था अगर विराट कोहली वो 5 रन नहीं बचाते तो. नहीं, वो भी नहीं. Look, Virat Kohli and Sanju Samson, after 2 of the most ugliest shots in their combined history, look at what they did. Sanju Samson का leg side stumping,
ईशान किशन, जितेश शर्मा एक तरफ, सैमसन का स्टंपिंग, दिस इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क. देन ही टेल्स मुकेश हटो एंड ही थ्रोज इट. ओके, दिनेश कार्तिक ने एक स्टंपिंग किया था इंग्लैंड में. 2002 की बात है यार, कोई बात नहीं. हाँ, कोई नहीं. हाँ, एग्जैक्टली, बट आई एम सेइंग after the two worst shots of this series, okay, what those two guys did, we have to like applaud them. Virat Kohli ने catch लिया, 5 रन रोके, Sanju Samson with his brilliant work, he told Mukesh हट सामने से, and he got it. मैच खत्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रोहित शर्मा ने आखिरी ओवर वॉशिंगटन सुंदर से नहीं डलवाया. Please, nobody on the stream tell me छोटा ground. No. Washington Sundar, 3 overs, 6 runs. He goes to Mukesh and Avesh type bowlers. This is where I was disagreeing with Tawas. Bhai, आपका experience आपको T20 World Cup में late डूबेगा. This was a childish club level error from Rohit Sharma, and I had genuine concerns about his thinking. In a crunch situation, जो team ऐसी वाहियात decision लेगी, you could have closed this match out. Okay, I had great fun watching two Super Overs, but 40 minutes later, मैं टीवी पे देख रहा हूँ, I was putting myself to bed. मैंने कहा हो गया. I'm saying Mukesh, what has Mukesh Kumar done in his career to convince? It's the Chinna Swami, सब पीते. You always go to the best bowler. आखिर कौन आपको मैच लेके गया? Your spinner. Why the hell didn't you give the final over to Sundar? Shit, captaincy from Rohit Sharma. I just want to add on to that Mukesh Kumar thing. The more and more I see Mukesh Kumar, I'm unconvinced of the fact that he's a T20I bowler, more so a death bowler. But the thing is, Jamie, the fact is, in Indian cricket, we have seen this, that you give opportunities, or you give, you try to make a bowler or a certain type of bowler out of these guys. And Mukesh, look, he did bowl a few Yorkers, but doesn't look like a T20 bowler. But then again, this is, I think, something that the management is going with Mukesh as your death bowler, which is not the ideal thing, which I would say would eventually harm India if this is the thought process they're taking to the World Cup, etc. But then again, look, this is how Indian cricket works. Maybe trust him on that role again and again and again and again. After like 20 odd failures, he might give you 2-3 good matches, and that's about it. That's what you saw. And very rightly pointed out there, Washington Sundar had 1 over remaining in the stipulated time. Why was he not bowled? Why didn't he bowl that quota of bowlers? Ravi Bishnoi did go for runs, and of course, before going to Mukesh Kumar, you should have gone with Washington Sundar for the first super over. Great decision in the end to go with Ravi Bishnoi for the second super over, and that's what you see. I mean, this is a pitch that you got in with 3 spinners: Sundar, Bishnoi, and Kuldeep. And yet you're going to a Mukesh Kumar for your super over. Spinners was the one who tied up those runs in the middle overs as well. Sundar picked up 3 wickets. Yet you're going with your pieces. Avesh Khan, once he gets starts to get strong, he goes for many runs, and that's what you saw. Very unconvincing. Rohit Sharma captaincy there. What, he scored 150 odd runs in the entire game now. And that's just the thing that he got a win under his belt. I was having this fun in one of our groups. सुना कि रोहित शर्मा का अब इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर हो गया इंडिया के लिए कंपाइल्ड. Here I would like to add on the bowling front. Rohit Sharma is so used to captain Bumrah kind of bowlers, or maybe a Mohammad Shami in the death over. Here I'm not defending. I'm just saying my part. That he had faith. He thought that the Mukesh Kumar might affect like a Bumrah. My fast bowler at the end of the day. So he might come and affect. इतना साल T20 नहीं खेला है वो, इतना मतलब इतने टाइम से, तो he doesn't know what kind of bowlers, who they are. Suddenly you come and you are in that situation. Again, कैप्टेंसी का सवाल obviously है ही, क्योंकि आपने पहले 2 मैच में टॉस जीतकर फिर वही सवाल आ जाता है, बल्लेबाजी नहीं की, आपने चेस किया, तो आपको पता ही नहीं कि आपके बॉलर्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप बुमराह से यूज टू है, आप शमी से यूज टू है, आपको पता नहीं कि रवि बिश्नोई भी अच्छे डेथ में डाल सकते हैं या वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा डाल सकते हैं, क्योंकि हम फॉलो करते हैं इंडियन क्रिकेट को रेगुलरली और कीनली विद शार्प आई, वी एग्जैक्टली नो व्हाट दीस गाइस कैन डू. सॉरी, बट कैप्टन रोहित शर्मा हैज बीन लाइक खेलने के टाइम के बाद में ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ. T20 शायद फॉलो भी नहीं करते होंगे इतना. आई एम जस्ट सेइंग, डिफेंड नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि उनको पता नहीं होगा कि उनके स्ट्रेंथ क्या है. तो इसलिए आपने कप्तानी शुरू से ही आपकी ये रही कि भाई आपने
फील्डिंग ही नहीं ली, अपने अपने बैटिंग चूज नहीं किए पहले, तो वहां से शुरू हो गया गलत और यहाँ तक आपको पहुंचा दिया। No, no, but Jamie, I believe I'll come to you. I'll just take a comment from Jamie. Jamie, यहाँ पे बट आप इतने टाइम से कैप्टनसी तो कर ही रहे हो ना यार, आप नेट्स में कुछ तो देख रहे हो ना, जो आपने डिसीजन लिया कि वो आपका सुपर ओवर डाल सकता है, आपने कुछ तो देखा होगा ना। दिस इज अ शेयर फेलियर ऑफ अ कैप्टनसी। ठीक है, आपने बुमराह एंड शामी वो नेचुरली, ठीक है, एक इंस्टिंक्ट होता है। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द आईपीएल गेम्स जहां 2 सुपर ओवर हुए, शामी एंड बुमराह वर बॉलिंग, एंड वी वर रियली हैप्पी कि इंडियन क्रिकेट की बॉलिंग किस तरीके से चल रही है, बॉटम लाइन वाज दैट। लेकिन आज जो हमने देखा, थैंक्स टू रोहित शर्मा, पहले सुपर ओवर में दो छक्के लगा दिए, वरना वहां गेम खत्म हो गया था। So I mean, I don't really buy that argument as an yeah, but No, what it's obviously instinct, and instinct can be right, it can be wrong. But in T20, the most fickle thing, common sense says you go to your best bowler of the day. And yeah, Mukesh Kumar had 30 runs in 3 overs. Wicketless. Is he your best over, or the guy who's gone for six at the yeah. Chinnaswamy and put you back in the match? So this is where past net sweats for me it doesn't give a damn. The best bowler, बाकी किसी एक bowler ने wicket नहीं लिया, उसने 3 लिए, and you're saying नहीं चल हट सामने. Very very shocking captaincy from Rohit Sharma for me. Yeah, go ahead. No, just to add to that point, I just wanted to like add on to what Taoz was saying on to Jamie. It's not just about the captain, right? I take the fact that from here you said he Rohit Sharma ने ऐसे इन bowlers को नहीं देखा है. He doesn't have the experience of playing with these bowlers. But what is the management doing? What is Rahul Dravid doing? You have such a vast analytic team and everything giving feeding data to them. I mean, look, for me, I always have believed that T20 captaincy, it's not just about the captain, it's the team management that does everything. Prime example being Hardik Pandya, Gujarat Titans, Ashish Nehra. So it's not just Rohit Sharma's captaincy. He's the face of it. But what is Rahul Dravid doing? What are these analytics guys doing? And that is where my question of whatever we can discuss or whatever we can talk about how Mukesh Kumar doesn't look a T20 bowler, doesn't look this kind of a bowler. Washington Sundar is quite great. But these are data. Some data are being fed to Rohit Sharma and Rahul Dravid saying that this kind of bowler is fit for this or this bowler is not fit for that thing. I think it's more of that premeditated or preset thought process. Ki this is what we are going to do. And to be fair, this is a T20 game against Afghanistan. क्या relevance है कोई relevance नहीं. You want to try out things, it comes back to that thing. यार try out किया था मुकेश कुमार को, चलो अगर हार गए तो फेल हो गया, अगली बार नहीं देखेंगे. अब जीत गए तो चलो ठीक है, ठीक कर दिया. But then again, yeah, unconvincing. But I wouldn't really completely blame Rohit Sharma here. It's just the management, and the more, as I said, the more I see Mukesh Kumar, the more not convinced I am. The same is the more I see Rahul Dravid sitting in that dugout as a coach, the more and more I feel it's not working out for Team India. Okay, fine. I somehow agree to what you're saying, but now मैं थोड़ा सा 3-4 घंटे पीछे जाऊंगा. You win the toss, you bat first, you get that defensive approach in again because you are 2-0 up in the series, and you were 22 for 4. You are all at sea. You have a Sanju Samson. In what sense? I mean, I'm talking about in general, like you are 2-0 up in the series. That's why you're taking that batting now in the third game. And that backfired. Almost that backfired. वो तो आपने बहुत ही बढ़िया नॉक खेल दिया, and that was a spectacular inning. But 22 पे 4 थे आप. यही कोई और, all due respect to Afghanistan, but यही ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड होती, बॉस 50 के अंदर निपट जाते आप किसी भी स्टेडियम में, किसी भी वेन्यू. So Not. Let's give credit to where it's due. Rohit and Rinku played a fantastic T20 innings. वो तो है ही है. okay, This is not look. You go back to Rohit's knock. You'd say class is permanent, form is temporary. So Rohit Sharma showed that he does have that caliber to do it. Rinku Singh showed his potential that he's not just a one trick pony. He's not just a batter. He can construct an innings and then can go hammer and tongs. So that's done. I mean, even against Australia, this could have been done. Not saying that Australia की कोई इतनी घातक bowling है T20 में. T20 में no bowling, no team is a cut above anybody else. That's the beauty of the T20 game. Afghanistan, to their credit, did really well. I mean, even despite from
22-4 212 उन्होंने कंसीड किया. Still they wanted to fight. They gave a great fight with Gurbaz and Zabran playing fantastically well. So it was a game where they were not thinking, yeah, we lost out or something on that part. For India also it is the same thing. Look, I'll come back to the same point that does it matter? Does these things matter? कि यार 22-4 थे, defensive mindset था. As you yourself mentioned, अगर तुम्हें कुछ अलग करना था, फील्डिंग कर लेते यार, वो किया ही नहीं तुमने. सो एक प्री, मैं वही कह रहा हूँ, प्री मेडिटेटेड माइंडसेट के साथ तुम जा रहे हो. सो there's not too much that you can dissect here in that sense. I'm saying आपने आपकी डिफेंसिव अप्रोच ऐसे थी कि आप टूने लगते आपने इसलिए वो रिस्क उठाया कि चलो बैटिंग कर लेते हैं. आज अगर हम टॉस जीत गए हैं, आप 2 टॉस पहले भी जीते थे, आपको ये चीज पहले मैच में भी पता लग सकती थी. दैट इज व्हाट माय आइडिया इज लाइक. बट ताउस भाई, यू नो हाउ डिसअपॉइंटेड यू वर. ठीक है, हम लोग मैच जीत गए हैं, बहुत खुशी है, बहुत एंटरटेनिंग गेम था, सब ठीक है. T20 ऐसा ही होना चाहिए. ऑल आई बाय एवरीथिंग. बट 22 पे 4, हाउ डिसअपॉइंटेड यू नो विराट कोहली हॉरिबल शॉट, संजू सैमसन हॉरिबल स्ट्रोक. No, you can't do that. यार मैं डिसअपॉइंटेड क्यों होऊंगा यार, जिमी भाई. आपका तो प्रिडिक्शन ही रोहित ने 100 मार दिया भाई. देखो रोहित के 100 की बात नहीं है. देखिए देखो विराट कोहली का बॉल भी अमेजिंग था. द बॉल दैट ही गॉट वाज अ गुड पिच. आई मीन इट बाउंस्ड एक्स्ट्रा एंड देन अनप्लेएबल. आई मीन आप देखेंगे कि यार रॉन्ग शॉट खेल के, बट देन वो सडनली बाउंस हुआ बॉल और अनप्लेएबल था. नहीं तो विराट कोहली नॉर्मली वो डीप मिड विकेट के ऊपर या स्क्वायर लेग के ऊपर हुक कर देता है. सो दैट वाज अनफॉर्चुनेट. जो यशस्वी जायसवाल गॉट आउट, अनफॉर्चुनेट. बट देन Yeah. वहां से शिवम दुबे अगेन, शिवम दुबे बैट शॉट, सैमसन कोलैप्स हो गया. आई मीन शुरुआत में आपको खराब स्टार्ट मिला, स्ट्रगल करते रहो रोहित शर्मा. आई मीन दैट इज वेयर आई वुड से कि यार एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस. और यहाँ पर ही हैड टू प्रूव पॉइंट. इतने टाइम से 0-0 के बाद ही हैड टू प्रूव पॉइंट. तो अगर मतलब सवाल और खड़े हो जाते हैं भाई, सवाल क्योंकि आपके पास समय नहीं है, समय जा रहा है. अगर आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको कुछ मैजिकल करना था. और एट द एंड ऑफ द डे यार भाई अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं. बाय द वे स्पिनर्स के सामने ही स्टिल लाइक फाउंड वांटिंग. इधर उधर ट्राई कर रहे थे कुछ ना कुछ करने का, तो लग गया. आज दिन उनका था तो आज बच गए वो. नहीं तो कोई अच्छी टीम होती तो चले जाते. बट देन विकेट वॉज चिन्ना स्वामी स्टेडियम एज वेल. आप ये भी कंसिडर करो, धीरे धीरे थोड़ा बैटिंग विकेट होती जा रही थी, थोड़ा थोड़ा पाटा होती जा रही थी. शुरुआत अच्छी मिली नए बॉल से. ऑब्वियसली ठंडी की कंडीशन है, स्विंग भी मिलेगा, थोड़ा सा ड्यू भी मिलेगा. बट देन जो शुरुआत खराब होने के बाद जो कमबैक किया है, थोड़ा सा कॉशन भी मिक्स किया, अग्रेशन भी मिक्स करके रोहित शर्मा ने बाद में कवर अप किया. एंड ऑफ कोर्स रिंकू सिंह, व्हाट एल्स डू यू वांट टू से यार. रिंकू सिंह जबरदस्त प्लेयर है. व्हाट अ प्लेयर मैन. कहां था ये भाई, कहां था. ये 5 छक्के आईपीएल में 5 छक्के मार रहा था इससे पहले. बट ओके, जिमी, ताउस भाई जस्ट मेंशन्ड अबाउट रोहित शर्मा, राइट. जो दूसरा चौका जो लेग बाय दिया, he was a bit too animated. Do you feel थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ठीक है वो मजाक मस्ती एक अलग चीज है, बट वो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन दिख रही थी कि यार रन लेने दो यार इस सीरीज के अंदर. आई एम नॉट बिल्कुल. गेटिंग. नहीं, एब्सोल्युटली इट वाज दैट. आई मीन रिमेंबर व्हाट, मार्च के महीने में सूर्य कुमार यादव 3 बार लगातार आउट हुए डक पे. रोहित शर्मा डजंट वांट दैट काइंड ऑफ द मिसफॉर्चून टू हिज नेम. तो ऑब्वियसली ठीक है यार, मतलब पहला मैच में शुभमन गिल ने उनको आउट किया, फिर दूसरे मैच में खुद आउट किया, तो यू अंडरस्टैंड दैट. एंड आफ्टरवर्ड्स वी हर्ड हिम ऑन द स्टंप माइक आस्किंग अंपायर आल्सो के वीरू भाई यार ये क्या था, क्यों क्यों दिया. But there's no better way to come back from 2 ducks, than taking your team from 22 to 190 की partnership, highest partnership in India's history, highest 5th wicket partnership in the history of men's T20Is. And I mean, Tozbhai बिल्कुल सही कह रहे. He struggled against spin, but he showed the value of just not playing shots too quickly. Look, we've discussed. हम हर बार कहते हैं कि intent was there, but sometimes when the scorecard is 10 for 3, 20 for 4, you have to somewhat change your game. He changed it, and I think he only got to the 100 because Rinku, मतलब भाई Sky और Rinku पहले 2 नाम होने चाहिए T20 World Cup 11 में, and this is what Rinku does. He gives you confidence. रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली. I think first person to get 5 T20 100, but yeah, batting and bowling is about two things. Yeah. I don't think any other player in current form or mindset could have gotten him there, So if he was batting with Samson or anybody, it wouldn't have happened. Dubey, Rinku ke aate hi, bhai, I'm sure he got some confidence. Or by 36 run ek over mein, Rinku hitting 4 sixes, it just shows brilliant. And I hope Rinku plays every single match in the T20 World Cup. Is pari ke baad yaar.
Jimmy just talked about Rinku. Okay, with Rinku and Jaiswal, you do get that kind of a confidence कि अगर ये दो बच्चे हैं, लड़के हैं, तो स्कोर चलता रहेगा, स्कोर कार्ड will go, will move. But वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी शुभमन के केस में आ रही है. Do you think कि एक डर होता है कि he will get out whenever the kind of form he has been in the recent couple of months, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको उनको लेके एक टेंशन रहता है कि यार मतलब कोलैप्स हो सकता है, कोलैप्स बचेगा नहीं. लेकिन वो So, इनसिक्योरिटी आ रही है उनको लेके. and वो Shubman Gill's insecurity, I always have been a believer that he is not the ideal choice for a T20 opener slot. Having said that, जैसे कि मैंने बताया कि Surya and Rinku would be the first two names in the score sheet. I'll add Jaiswal's name there. He should be the first. And then Surya Kumar Yadav and Rinku. The reason being fearless cricket, and that is what has been marring this Indian T20, setup. There are not enough players who play fearless brand of cricket. Jaiswal is doing it, has been doing that ever since he made his debut. Rinku Singh, आपने देखा, that's what he does. Even in this game, I mean, he settled in, but he was fearless in his approach. That helped Rohit Sharma as well. And that is what you need in T20 cricket. यार अर्जुन चाहे हो चाहे विराट कोहली हो, even if Rohit Sharma, if I go back to the T20 2022 T20 World Cup where England ransacked us, there was that fear. We could see that. Their batting, they had this fear in their batting, and that fear is obviously in a Gill also, in a Ruturaj Gaikwad also, the kind of, because the kind of batsmen they are, the kind of technique that they have, it's just, it's not that fearless cricket is what I feel. Gaikwad gives you that, Rinku gives you that, Surya Kumar Yadav of course gives you that. You need more of that. I mean, just imagine if you have Nishan Kishan in the mix there, it would have been great. That's a different story to talk about. But that is what you need. You need this fearless kind of guys who just go hammer and tongs, whatever the situation is. Sometimes you keep in T20, if you are in a tough situation, you don't have to be the anchor. You just have to hit out. More often than not, it might not work out, but maybe that's what England does. Again, go back to the 2022 World Cup. They were just going hammer and tongs. Yeah, beat Jason Roy, beat George Butler. That's what you need in T20 cricket. That impact is what you need. You don't have to look for the runs. You don't have to look for your averages or anything. Quietly, that impact is what matters, and that is what Rinku Singh did. 103 runs in the last 5 overs from Rohit Sharma and Rinku Singh. I mean, it's fearless. Ball. That's the kind of cricket you need to play. Forget about 22 to 4. I'll take 22 to 22 for 4 if you more often than not end up 200 plus. I'll take that for sure. Yeah, but again, I just feel हम T20 को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज कर देते हैं. आज हमने बिल्कुल. जो देखा ना, वो दैट वाज कि यार बॉस करने की जरूरत नहीं है. You need to have those kind of players जो who are not fair, who don't have that I fear in their also have mind. Jitesh's name here. I missed out Jitesh. Jitesh also. Jitesh, yeah. Jitesh and also Ishan, यार. Ishan is also someone who can, अगर आप उसे एक सिक्योरिटी दे दोगे ना, वो खेलेगा. वो लड़का तेज खेलने वाला है और वो क्रॉस फॉर्मेट बहुत तेज खेलने वाला है. उसका टेम्परामेंट है ऐसा. खैर ईशान पे बाद में बात करेंगे. I have a lot of comments here. Tauzai, I'll start with you. Ujjwal is saying this was not a 200 pitch. India bowled poorly. Partially, I do agree to that. I have to say. Bangalore track, yeah. Any given day it's a 200 plus wicket. Yeah, दोनों टीम में 200 मारे यार. और चिन्ना स्वामी यार धीरे धीरे, I mean initially, I mean if you saw, I mean these guys, the way India got out for 10 for 4 or 20 for 4, 2 for 4. थोड़ा कंडीशंस, सीमिंग कंडीशंस ना थोड़ा हेल्प किया. बाद में ईज आउट हो गया, तो जितना ईज आउट हो गया फिर उतना बैटिंग के लिए सेकंड इनिंग्स भी इजी हो गया. बट देन क्रेडिट टू अफगानिस्तान है यार, व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस. उनके बारे में भी तो थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए उनको. सो 200, अरे चिन्ना स्वामी हैज ऑलवेज बीन अ बैटिंग विकेट यार, नो डाउट यार. आरसीबी फैन से पूछो. हमसे पूछो. हमने 200 रन चेस करवाए, 220 चेस करवाए हैं. Okay, sportsman is asking Jamie, this is how we are batting first and defending total. That's why we were scared to do it in first T20. Basically, that's why we didn't opt to bat first in the first T20, two T20s. Maybe बात में दम है, but I'll go back to what I've been saying for a long time. Can you go into a T20 World Cup just expecting to chase each time? No, no. You need to be 50-50 option, right? Again, Virat Kohli is not going to play that shot every time. Samson छोड़ो, वो तो जाएगा भी नहीं World Cup. But I'm saying this is not going to happen, right? Rohit Sharma is also not going to bail you out, right?
It's not like when Rohit Sharma said, "Achha, aaj hum batting karenge." He thought ke he'd be 20, the score would be 22 for 4. No, you don't see things happening like that in cricket. But my point is, those 5 T20s against Australia, inconsequential. South Africa T20 is inconsequential. These matches inconsequential. When the writing is on the wall कि आप वहां जाके वही गलतियां एक बार फिर से दोहराएंगे, what is the point, right? Like I keep asking myself, what is the point of this Indian team? Is it just to take those trophies to the BCCI headquarters? Is it just to be number one across formats? What is it, right? At some point, chalo, I'm sure the fans will be like, हमें बहुत मजा आया. But yeah, trophy कब आएगी? The actual trophy that matters, you know. So if you want to win that, one, to my mind, who am I? Yeah? To my mind, one thing is be prepared. Get into the habit of batting first more often, right? You could be the best chasing team. You may have the greatest chaser in T20 is Virat Kohli. But if that's your template, now so again, you want to call it negative, you want to call it जो भी है, you just need to be prepared. जब भी हम जीते टॉस, हम chase करेंगे. अच्छी बात है, but it's not going to win you a World Cup, you know. That's Somewhere my down view the on line, this. why you are? But I'm shocked. I mean, it's not like, see, batter as a batter. I mean, Jamie, bhai, you've played. Everybody of us have played. Some way or the other, we love batting first. जब भी हमने देखा है टॉस जीता है तो हम बैटिंग पहले ही करते हैं. और रोहित शर्मा यार वो बैटिंग का ग्रीडी है, वो हो या विराट कोहली. I mean, surprising that these guys are choosing to bowl. I mean, bowlers. I mean, batting I is something that's why like I label this as ज्यादा a अपॉर्चुनिटी आपको स्कोर करने का, बड़ा स्कोर करने का. आप 20 ओवर खेलोगे तो ज्यादा रन स्कोर कर सकते हो, और चेजिंग में आपका रन ही नहीं होंगे. इंडिविजुअली मैं बोल रहा हूँ. no, that is why I say defensive approach. No, that is why I label it in that way because you just want to be in that secure zone कि बस हारना नहीं है. सीरीज जीत गए आज अगर हार भी जाते तो सीरीज ट्रॉफी तो अपने पास है ना जस्ट एज जेमी मेंशन्ड. ओके, मूविंग ऑन. अंकित Rahul is saying you can't give death over to a spinner. Vineet, what do you have to say? भाई रवि बिश्नोई ने आपको जिता दिया सुपर ओवर, आपका उससे ज्यादा आप क्या चाहते हो? आई मीन इट डिपेंड्स यार, इट डिपेंड्स. आई मीन हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? अंकित धूल. अंकित जी, इट डिपेंड्स यार, इट डिपेंड्स. इफ आई टेल यू आपके पास राशिद खान है टू बोल द डेथ ओवर्स, आप कहोगे कि नहीं, राशिद खान से मैं बॉलिंग नहीं कराऊंगा. There are various factors to that. Of course, I mean there is always been a tendency to see spinners going for a lot of runs, but if the spinner is the quality of Rashid Khan or maybe a Ravi Bishnoi, or if the spinner has done well in that match. I mean, as Jimmy mentioned, Washington Sundar in this run fest went for what, only 6 runs per over. So why not? Why won't you give that ball to him? I mean, that bowler would have the confidence of you know defending whatever the target is. So it depends on various factors, and there is no hard and fast rule or a premeditated mindset where you don't give to spinners. Imagine if Shahid Afridi was here, and why wouldn't you give the death overs to Shahid Afridi? I mean, no bowler would be able, no batter would be able to catch his balls. I mean, depends on various Sakleen factors. Mushtaq, man. The guy was Ismail bowling Mushtaq, death overs in '96 and winning matches. So there's no such rule, yeah. 90s, yeah. In fact, just one sec, I want to add the cricketing part of it. आप देखेंगे जो बुमराह और मलिंगा के अलावा who have been the experts of bowling in the death over, who have how many bowlers, fast bowlers have won you matches, like अभी एकदम आके कि आपको रन, आपको bowlers जो away अभी going deliveries डालते हैं ना, जो don't away think going delivery and somebody who has variety, somebody who's got the pace, they are more dangerous. आप अभी यहाँ पर लेफ्टी दोनों एंड पे होते तो आप देखते वॉशिंगटन सुंदर आके जो एडवांटेज निकालते. फास्ट बॉलर्स का ये रहता है, एज लगेगा तो जाएगा पीछे बाउंड्रीज पे, या तो एक अच्छा टाइम करेगा बॉल तो चांसेस है बाउंड्री के ऊपर जाने के. So that is the disadvantage of having not bowling fast bowlers, having bowling fast bowlers. While spinners give you edge कि जरा सा एक लूप दिया, मिक्स करके डाला, आपको टॉप एज लगने के चांसेस है, या तो एक हाथ में जाने के चांसेस है. और फास्ट डाला रोकने के लिए आपके पास बिश्नोई है, somebody who knows, who can bowl at a good pace, और Rashid Khan who's yes. got the grip. तो डिफिकल्ट हो जाता है. डेथ ओवर डालें आप, शुरुआत में डालें, आप कर सकते हैं. Yeah. And I also, I just noticed something in Washi's bowling. Initially, उन्होंने एक दो बॉल फेंके जो थोड़े वाइड जा रहे थे. He just changed his line a bit, length, टॉस अप किया and वो टर्न मिल रहा था. So they could have gone towards him. ना भी इसी चक्कर में आउट हुए, ना भी को अवे डाला और उठा दिया उन्होंने. Again, okay.
So Shankar is asking, that's why you need experience in team. Under pressure, youngsters usually falter. Sorry, sir. Rinku Singh का पारी देखिए आप. Jamie, but if you want to take this up. No, I mean, look, I can understand where Shankar comes, but I have lost faith in such statements क्योंकि Yeah. experience ने आपको 15 साल में क्या दिया? True. एंड बहुत बड़ा इंस्टेंस आज ही है ना, रिंकू सिंह ने आपको एक यंगस्टर की वहां रुकने की जरूरत थी, ही स्टेड, ही स्कोर्ड रन्स एंड ही एक्सीलरेटेड 100 रन की पार्टनरशिप ही आपके 5 ओवर में। You need look, you need a mix, okay? You need a mix. Yes, Rohit Sharma got a blinder of 100, but like I said, batting is done with two people. He had Rinku Singh there. All said and done, Washington Sundar was 24, I think he is. He kept you in the game. At the end of the day, who won the game for you? Bishnoy, who's 23 years old, right? So in this day and age, yes, experience does matter, but I think you just need to pick in more youngsters. If they Yeah, fail, ठीक है. आपकी record holder ने क्या उखाड़ा है? Nothing, right? May as well go for youngsters. yeah, इनफैक्ट जेन जी ज्यादा प्रेशर सोक कर सकते हैं और ज्यादा बेटर डिलीवर कर सकते हैं. आई मीन दे हैव सीन ऑल द दे हैव गॉट ऑल द एक्सपोजर व्हाट मेनी ऑफ अस हैवंट गॉट. सो वो Yeah, माइंडसेट नहीं मिलेगा. और आप 90s और 2000 का छोड़ दीजिए, आप आज के जमाने में देखिए, आज के जमाने के यंगस्टर्स टेरिफिक है यार, true. टेरिफिक. Okay, sports fan is saying, Vineet, Rinku showed his mettle, whether it is arresting a collapse or finishing the match. Well, we have talked about it, but if you want to take this up again, Vineet. Yeah, asking Rinku, me. yeah, Rinku showed his metal, whether it's resting collapse or finishing match. Of course, he has. I mean, the kind of innings that he played again, as I said earlier, he showed that he's no one trick pony. He'll come in the last 30 balls or 24 balls and he'll go hammer and tongs. He knows, he understands the game. He's able to read the game well. And this is a trait that has been with him for a long time. Just to remind the viewers and the person who put up the question, you go back and look at the domestic record for Rinku Singh, 3 years, 4 years पहले से ही वो यूपी के लिए खेलते थे, नंबर 5 पे आके ऐसे धुआंधार पारियां खेलते थे, 200 रन मारते थे, 250 मारते थे. ऐसा नहीं कि वो आंख बंद करके घुमाते थे. यू शू रीड द सिचुएशन. वो नीचे नंबर 6, नंबर 7 के साथ बैटिंग करते, तो ही समबडी हु रीड्स द गेम. और उनको वो कॉन्फिडेंस मिल गया केकेआर में आने के बाद कि रियली वो ऐसा होता है कि द काइंड ऑफ एलिवेशन दैट यू गेट इन टर्म्स ऑफ केकेआर में. आप वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, आईपीएल में वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को फेस कर रहे हो, उनको तुम भूत बना के मार रहे हो, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये सब चीज मेरे लिए आसान है, काफी आसान लगने लग जाता है. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद रिंकू सिंह. और ऐसा नहीं है कि मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया. दिस वाज समथिंग इन हिम, be it IPL, be it his mentors, or be it that India debut that gave him वो खुद में खुद वो अपने आप को elevate कर दिया है. And if he's getting the opportunities and he's making the most of it, unlike what Sanju Samson did. So, credit and true. kudos to Rinku's thing. As again, on the repeating myself, Rinku should be one of the first names in the T20 setup, T20 squad for World Cup for India. Not just Samson, Vineet, a lot of players who are still playing domestic and just boasting some certain things, some random things on social media. Absolutely, absolutely. ये भाई He साहब कुछ बोलते नहीं है, बस करके दिखा देते हैं. and he's been doing it in the red ball as well. Red ball setup में भी यही करते हैं यार domestic में. मतलब एग्जैक्टली दैट्स व्हाई मैं रेड बॉल में रणजी में उन्होंने जो रन मारे हैं वो बहुत 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 क्रूशियल रन मारे हैं. इट्स नॉट इजी टू कम एंड बैट एट नंबर 5, नंबर 6 एंड स्कोर 150 to 100 at a regular you know true. frequency. He has done that, so it's easier for him that way. I mean, यहाँ पे 20 बॉल है और वहाँ पे तो 150 बॉल पे 200 मार रहे हैं. यहाँ पे तो 20-30 बॉल में काम करना है उन्हें. बस कॉन्फिडेंस देने की बात है, उन कॉन्फिडेंस उनको मिला. Be it you can say KKR, be it the management, whatever it is. One good thing that probably this management did was to back somebody like Rinku Singh and give him the opportunities. Yeah, let Rinku Singh be himself. Okay. Okay. Moving on. Ujjwal is asking again. Taus bhai, Ujjwal saying after 10 overs, India took it for granted. Crazy bowling changes, poor captaincy. Shivam Dube proved he is no bowler. Sir, Shivam Dube को तो हम भी कह रहे हैं as a bowler नहीं खिला सकते आप. Pure batter खेलेगा. Taus bhai, your thoughts? शिवम दुबे कहाँ खेलेगा यार एज अ बॉलर. वो तो मतलब कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए खिला रहे. या मतलब देखिए, अभी हार्दिक पांड्या आ जाएंगे ना, तो कैप्टेंसी शायद चली जाएगी रोहित शर्मा की. और
मेरे सारे प्रॉब्लम्स शायद सॉल्व हो जाएँगे। सी डिफिकल्ट यहाँ पर देखिए अभी आप मुकेश कुमार और आवेश खान आई मीन आप देखेंगे तो ये धीरे-धीरे इसमें आ रहे ग्रुप में आ रहे हैं। दे आर नॉट T20 bowlers honestly मुकेश कुमार इज़ अ गुड लाइन एंड लेंथ bowler, ब्यूटीफुल एक्शन फॉर टेस्ट क्रिकेट और मे बी ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआईज़। T20 क्रिकेट अनफेयर टू एक्सपेक्ट हिम टू कम एंड बर्स्ट बुमराह की तरह और क्योंकि हमने बेंचमार्क ऐसा रखा है ना मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा नहीं और बाद में उसके बाद आपके आवेश खान अभी भी सीख रहे हैं, बहुत टाइम है अभी सीखने को और ये सीखने की उम्र नहीं, आपको तैयार होके आना चाहिए, व्हिच इज़ सो अनफॉर्चुनेट दीज़ गाइज़ आर नॉट लर्निंग। यू हैव टू बी क्विक लर्नर्स क्योंकि आपका समय नहीं है। तो वो कैप्टेंसी भी अभी क्या करेगा वो कैप्टन की भाई आपके पास बॉलर्स ही एट डिस्पोजल। आपको जब ये मौका मिला ये बिश्नोई और वॉशिंगटन ने बीच में आके काम कर दिया, तो दैट इज़ समथिंग वो एक लैक होता है, एक कहीं-कहीं लूप होल्स है, तभी एक बर्डन आ जाता है। तो कैप्टन कितना करेगा क्योंकि आई मीन माइनर चेंजेस आप T20 क्रिकेट में कितना करेंगे? सी देयर आर स्ट्रैटेजी आप कितना अप्लाई कर पाएँगे? दैट इज़ समथिंग आई एम वरीड अबाउट कि यार आपके डिस्पोजल पे क्या है एग्ज़ैक्टली व्हाट व्हाट डू यू हैव एग्ज़ैक्टली विथ यू इन योर आर्मरी, इन योर वेपनरी? सो आपका जो भी आपको उसमें ही यूज़ करना है। आपके काम आए वॉशिंगटन और रवि बिश्नोई। दैट इज़ समवेयर दुबे हम तो पहले से ही सब कह रहे हैं यार दुबे कहाँ है यार? Okay, lastly, तो रजत भाटिया से ट्रेनिंग लेनी चाहिए भाई थोड़ा डिबली-डॉबली डाल के ही कैन बी मोर इफेक्टिव और मे बी अ विजय शंकर। okay. Lastly, thoughts on umpiring tonight looked a bit sloppy in my opinion. Jamie, what do you have to say? I actually feel weird the umpiring decision. No, I think the biggest thing which we've not discussed yet is ICC needs to step in. This if the rules say that a batter who's been dismissed cannot come back, Rohit Sharma chose to go. It's he has been dismissed. A bowler is not dismissed, but he has chosen to leave the field. He had no business coming back to bat. Forget leg buys, forget umpires, forget Nabi running or not changing his line. This is a farce. This is one more thing which has to be addressed. कब तक क्रिकेट रूल्स को लेकर हम कहेंगे कि ये स्पोर्ट आगे भी है और सदियों पीछे भी है? द रूल सेज if a batsman has been dismissed, he cannot come back for the second over. You tell me, was Rohit Sharma not out? No, Even believe me, I am watching the match with my wife. I said, लिख के लो, ये दो नहीं भागेगा और उसी वक्त पे रोहित चल पड़े वहां से. Is this the leader you want to have for a T20 World Cup? जिसको खुद की रनिंग पे भरोसा नहीं है. But that's a side thing. I'm being very critical. The ICC needs to step in. This is a big gray area. Technically, Rohit Sharma was not allowed to come back. उस समय umpires, why are they not saying anything? And I know somewhere down the line it'll happen again. कुछ करेगा. Dismissed, even retired, hurt, retired, out, whatever, it counts as a dismissal. You cannot come back to. He's not hurt. He chose to leave. You cannot come back as per the rules of the game. Forget the umpiring on the field. This is the biggest farce after Rohit Sharma not giving the final over to Washington Sundar. True. Okay, JB, lastly, I would like to ask you, how impressed are you with the Afghanistan's decision of, changing a lot, making a lot of changes in this final T20I, not having their prime, first spinners. कितने impressed हो आप इन decision से? इतना bold चलने से? I don't know if it's bold. I mean, they've lost the series. I don't think they believe they could win at Chinnaswamy. उन्होंने 3-4 चेंजेस किए, हमने 3 जी. Basically, like we discussed before, साहिल ने कहा था आखिरी मैच में अच्छा भाई कौन तू खेला तू नहीं खेला तू आजा. As far as I'm concerned, nothing to read into them. You want to take people back home, having got one match, they got a taste of it. इसमें कुछ नहीं है वो. बट बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग गेम हो गया उनके लिए जो पहला मैच खेल रहे थे सीरीज का. वेल जेंटलमैन, अभी इस लाइव सेशन को यहीं एंड करेंगे. इट हैज बीन अ लॉन्ग डे फॉर ऑल ऑफ अस. तो अभी चलेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे और लाइव सेशन के साथ जुड़ेंगे और डिस्कशन करेंगे. वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन दिस. बाय, गुड नाइट. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.